Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, Assalamu alaikum. This is Misbah Sajid, and I welcome you all to my channel Talim for Everyone. In this video, we are going to finally start exercise 3C, question number 1, 2, 3. And this exercise is from chapter number 3, approximation and estimation. And this chapter is from new syllabus mathematics, book 1 or D1. So, I have deeply discussed the topic estimation, okay, and worked example 6 related to estimation. Okay, and now we are going to start our exercise 3C, and from exercise 3C, we will try to cover these three questions, question number 1, 2, and 3, okay, in this video. So here it's question number 1, and you may find this on page 76 of your textbook. And these three questions are from basic level of exercise 3C. So let's start. Let's read out the question 1. Statement of question number 1. According to question number 1, Priya evaluates 218 divided by 31 using a calculator, and she says that the answer is 70.3. It is somehow similar to work example 6 that we have done in our previous video. उसमें सिर्फ और सिर्फ operation different थे, addition and subtraction. Now here we have division. Okay, so if you see 218 divided by 31, according to calculator, using a calculator, Priya says that it is equal to 70.3. Okay, now without doing the actual actual calculation nahi karni, we have to just estimate to determine whether Priya answer is reasonable or not. हमने एस्टिमेट करना है, फिर उसके बाद एस्टिमेट करने के बाद या तो हम कैलकुलेटर में एस्टिमेटेड वैल्यू पुट कर लें या मैनुअली सॉल्व कर लें. अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर की यूज कर लें. इफ नॉट देन यू मे गो विद मैनुअल कैलकुलेशन. उसके बाद आपने क्या करना है, ये बताना है कि आपका जो एस्टिमेटेड आंसर है और जो प्रिया का जो आंसर है, बोथ आर close to each other or not, or you can say that Priya answer is reasonable, is correct or not. उसके बाद आपने क्या करना है, you have to put actual value into calculator, then you have to check our estimated and actual value is close to each other or not. Okay, so Priya evaluates 218 divided by 31 using calculator is 70.3. Okay, प्रिया का तो ये आंसर है. नाउ हमने अब क्या करना है, एस्टिमेशन करनी है, अप्रोक्सीमेट करना है 218 and 31 को to the nearest number, to the nearest whole number. So if you see by estimation, 218 is approximated equal to 220 because 218 is equal to 220 to the nearest 10. To the nearest 10, 218 is rounded up to 220 to the nearest whole number and to the nearest 10. Okay, and 31 is approximated equal to 90 again to the nearest 10. Okay, so 220 divided by 30. अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो आप लोग कैलकुलेटर यूज कर लें. इफ नॉट देन मैनुअल कैलकुलेशन करके देख लेते हैं. यहाँ पे 220 divided by 30. Okay, 0 से 0 cancel. Now 3 divided by 22. So manual calculation easy है, not a hard and fast rule. So 3 sevens are 21. 2 minus 1 is 1. 2 minus 2 is 0. Point लगाया 0. 3 threes are 9. 10 minus 9 is 1. Point already लगा हुआ है 0. हमने add कर दिया 3 threes are 9. So 10 minus 9 is 1. Now if you see, if you observe, ये कंटिन्यू ही होता चला जाएगा. पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यू. ओके, सो इट मींस दैट कि हम अपने हिसाब से जो है रोक दें, पॉइंट के बाद स्टॉप कर दें. सो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले रहे हैं यहाँ पे. सो 220 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 7.33 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, अब अगर मैं इस आंसर को, जो मेरा एस्टिमेटेड आंसर है 220 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 7.33, इसको मैं अगर मैच करूं प्रिया के आंसर से, सो प्रिया आंसर इज टोटली रॉन्ग. ओके, इज नॉट रीजनेबल. ओके, कहाँ 70 एंड कहाँ 7. ओके, नाउ if you put all these three values and put all these two values in calculator, मैं यहाँ से erase कर दूँ ये वाला part. ओके, कैलकुलेटर डिवाइड करें अगर आप कैलकुलेटर से ये
मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मैं यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ. तो 218 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 7.0322580645 you may easily understand it's a non-repeating and non-terminating values because डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यूज जो रिपीट नहीं हो रही, ना ही जो है टर्मिनेट होती हुई दिखती हैं. तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज. तो यहाँ पे भी मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लेती हूँ. इफ यू सी 7 is the non-zero, so significant. If you talk about this 3, so it is also non-zero and significant figure. And we know that according to rule 2, 0 in between two non-zero digits are also significant. So there हमने क्या किया यहाँ पे भी जो है 3 significant figures ले लिए. So 218 divided by 31 is equal to 7.03 to 3 significant figures. मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है. 3 significant figures. By calculator using actual value, we got 7.03 3 significant figures. So if we match our actual value and estimated value, then we can say that our actual and estimated value both are close to each other. So Priya answer is not reasonable, is not correct, and our estimated value is much close to actual one. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any queries, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. Now let's start our next question of exercise 3C. That is question number 2. And let's read out the statement of question 2. Estimate each of the following without using a calculator, then use a calculator to evaluate each of the following. Are your estimated values close to the actual values? Yes or no? So part A में है 2013 multiply by 39. Okay. So estimated value of 2013 to the nearest thousand is equal to 2000 to the nearest thousand. कैसे? अब आप लोगों को जो है ये पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी बता देती हूँ. टू द नियरेस्ट थाउजेंड अगर आपने राउंड ऑफ करना है इस होल नंबर को, सो यूनिट 10, 100, 1000. 1000 वाली वैल्यू जो है अंडरलाइन होगी, उससे पहले वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे सर्कल होगी. सो इफ यू सी दिस सर्कल वैल्यू, इट इज लेस देन 5. सो यहाँ पे भी 0, और जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं सर्कल वाली वैल्यू से पहले राइट हैंड साइड पे उनकी जगह पे भी एज अ प्लेस होल्डर 0 आ जाएगा एंड 2 रिमेन एज इट इज, क्योंकि जो है सर्कल वैल्यू इज लेस देन 5. So 2013 is approximated or rounded down to 2000 to the nearest whole number and to the nearest thousand. Okay, and if you talk about 39, so 39 is approximated equal to 40. Okay, so 2000 multiply by 40 हमने करना है. So 2000 multiply by 40. सो मैनुअल कैलकुलेशन कर लें, या जब आप अप्रोक्सीमेट कर लो, एस्टिमेट कर लो, तो उसको कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकालो. इफ कैलकुलेटर इज अलाउड इन योर इंस्टीट्यूट और स्कूल. तो 0 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 2 0. ओके, 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 2 8. So 0 0 0 0 8. So 2000 multiplied by 40 is equal to 80,000. ये तो आ गया हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू. नाउ एक्चुअल वैल्यू देखते हैं. 2000 मल्टीप्लाई बाय 39. मैं यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ एक्स्ट्रा चीजें, ये वाली चीज. 2000 multiplied by 39 will give you 78,507. So if you see, अगर मैं यहाँ पे 70,000 लिखूं एंड इन बिटवीन में यहाँ पे 78,507 लिखूं एंड देन 80,000 लिखूं. ठीक है. So if you see 78,507 is much close to 80,000. ठीक है. So in this way we can say that our estimated value and actual value both are close to each other. ओके, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो. और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करके भी दिखाती हूँ. 78,000, अच्छा 78,507 आया ना आंसर.
सो टू दी नियरेस्ट 1000 हमने इसको जो है वो किया है. सो टू दी यूनिट 10 100 1000. सो इट वुड 1000 10,000. It would be underlined and this would be circle. Okay. So it means that if you see the circle value, so it is greater than 5. So 7 plus 1 is 8. इस सर्कल वैल्यू की जगह 0 आएगा एज अ प्लेस होल्डर एंड रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं उनकी जगह भी 0 आएंगे. So 80,000. 78,000 is nearest to 80,000. Okay. So that is why we can say that our estimated value and actual value both are equal to each other. यहाँ पे जो मैंने राउंड ऑफ किया है वो टू दी 10,000 10,000 10,000 टू दी 10,000 नियरेस्ट 10,000 मैंने राउंड ऑफ किया है. तो देख लीजिए ये आ रहा है. अगर आप 1000 भी करके देखें तब ये इक्वल होगा 78,507. अगर टू दी 1000 करना चाह रहे हैं तब करके देखिएगा तो इट वुड बी इक्वल टू 79. ओके. ये 0 तब भी जो है ये वाली जो वैल्यू है ये 80,000 के ही क्लोज है. ठीक है. सो एक मैंने आई गेस कौन सा क्वेश्चन है आई एम नॉट श्योर राइट नाउ. अगर वो मुझे मिला तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगी. हमने चेक किया था वो जो हम जब राउंड ऑफ करते हैं कि जो कौन सी वैल्यू किसके जो है ज्यादा जो है क्लोज है कौन वो लार्जेस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू the possible largest value and possible lowest value जो हम राउंड ऑफ करके देखते हैं जो आंसर आता था वो आई डोंट नो कि वो कौन सा क्वेश्चन था और कौन सी एक्सरसाइज थी. अभी अगर मुझे मिल जाती है वीडियोस में तो मैं जस्ट की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी. तो इफ यू सी कि जितना जैसे कि 70 अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना टू दी नियरेस्ट 10,000 तो 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 देन 80 ना. क्योंकि मुझे टू दी नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ करना है तो 71 अगर होगा तो वो 70 के इक्वल होगा. 72 तो 70 73 भी 70 74 भी इज नियरेस्ट टू 70. 75 जो होगा वो अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो वो 70 के इक्वल नहीं होगा अप्रोक्सीमेट नहीं होगा बल्कि अब वो 80 के जो है जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है. So it means that 75 आ जाए या 76 आ जाए to the nearest 1000 इधर ऐसी कंडीशन में या 78 आ जाए 77 79 तो तब भी वो 80,000 के इक्वल होगा नॉट 70,000. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में भी करके बता दिया है आप लोगों को. सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. So 78,507 is approximated or you can say that is rounded up to 80,000 to the nearest 10,000 or it is closer to both values are closer to each other. Okay. Now next part is part B, square root of 145.6 divided by cube root of 65.4. तो इफ यू सी स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स तो इतने ज्यादा पॉसिबल नहीं होते मैनुअली करना तो मुश्किल है. तो अब हमें एस्टिमेट करना है यहाँ पे अगेन वही चीज के एस्टिमेट करना है. दैन वी हैव टू सॉल्व. ओके. सो 145.6 इसका नियरेस्ट नंबर ऐसा हमने ढूंढना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो. सो 145.6 का नियरेस्ट नंबर जो है 144 है. सो क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है डिवाइडेड बाय इफ यू सी क्यूब रूट ऑफ 65.4. तो 65.4 का नियरेस्ट नंबर 64 है क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. ठीक है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 divided by cube root of 64 is 4. How you all know that कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. या फिर जो अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक. So square root of 144 is 12 and the square root of 64 cube root of 64 is 4. So 12 divided by 4. 4 1s are 4. 4 2s 4 1s are 4 2s are 4 3s are 12. So 12 divided by 4 or you can say square root of 144 divided by cube root of 64 is equal to
3। ये तो आ गई एस्टिमेटेड वैल्यू। नाउ एक्चुअल वैल्यू, square root of 145.6 divided by cube root of 65.4, you will get 2.99. So if you see, हम यहाँ पे वही थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लेते हैं, 2.99. So estimated value this 3 and actual value 2.99 is much close to each other. So it means that हमारी कैलकुलेशन एस्टिमेशन वगैरह जो है सही है. So it's all about question number 2 part A and part B. मैंने part A थोड़ा सा डिटेल में करवा दिया, ठीक है. And if you have any confusion, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. All right, आगे चलते हैं. Now here it's question number 3, last question of this video, not exercise. Express 3.612 and 29.87 correct to two significant figures. Two significant figures चाहिए सिर्फ हमें, ठीक है. So two significant figures चाहिए, तो 3.612 is equal to 3.622, two significant figures. In decimal, all not in decimal, all non-zero numbers are significant. So two significant figures चाहिए, 1, 2, ठीक है. This one would be circle. So if you talk about this circle value, so it is less than 5. तो इन सबको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि डेसिमल में राउंड ऑफ कर रहे हैं. सो 6 में जो है कोई भी जो है नंबर ऐड नहीं होगा, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा. 6 would remain as it is and 3 as it is 3.6. So 3.612 is equal to 3.622, two significant figure. Now 29.87, two significant figures चाहिए, तो 9 would be अंडरलाइन एंड 8 वुड बी सर्कल. डेसिमल में राउंड ऑफ कर रहे हैं, जो सर्कल वैल्यू है और जो उसके बाद वाली राइट हैंड साइड पर वैल्यू, दैट वुड बी इग्नोर. बट इफ यू सी दिस सर्कल वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, सो 9 में 1 प्लस किया तो 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी एंड 2 प्लस 1 इज 3. so 29.87 is equal to 30 to two significant figure. ओके, सो हमने यही जो है आंसर्स यूज करने हैं जो हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट किए. नाउ वी हैव टू यूज इन पार्ट 2 टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 3.612 डिवाइडेड बाय 29.87. estimated value find out करनी. So 3.612 is approximated equal to 3.6 to two significant figures and 29.87 is approximated to 30 two significant figures. So अब हम solve इसको किस तरीके से कर सकते हैं. Now see 3.6 divided by 30. If you see there is a decimal, जैसे हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में 1, लेकिन ऑलरेडी पहले से वैल्यू मौजूद है तो हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, ठीक है. नाउ हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 1, so 1 0. So 36 upon 30 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो तब भी आप ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है नहीं. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 0 as it is. 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 5s are 10. So it is equal to 3 in denominator, 5 5 are 25. Okay, so 3 divided by 25. 3 is less than 25, so point लगाएंगे 0. 25 1s are 25. Alright, so यहाँ से हम borrow करेंगे. It is 2 and it is now 10. 10 minus 5 is 5. 2 minus 2 is 0. Point लगा हुआ है, 0 लगाया. 25 2s are 50. 50 minus 50 is 0. Alright, so estimated value of 3.612, sorry, 3.6 divided by 30 is equal to 0.12. So 3.6 divided by 30 is equal to 0.12 to 2 significant. So it's all about question number 3. If you have any confusion, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. So we can write the last statement as therefore estimated value of 3.612 divided by 29.87 is 0.12. Okay, कैलकुलेटर से अगर मैं एक्चुअल वैल्यू भी चेक करके बताऊं तो मैं आपको बता देती हूँ. 3.612 divided by 29.87. So it is also equal to 0.1209240040174. You can say that it's non-terminating
and non-repeating, but हम अगर two significant figures लें तो 0.12, and we know that in a decimal number 0 before non-zero is not significant, but two significant figures तक 0.12, so two significant figures. Okay, so it's all about question number 3. If you have any query, आप लोग जो है comment कर सकते हैं किसी भी time. So thank you for watching. If you like this video, don't forget to subscribe my channel Talim for everyone and hit like button and press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे. So also don't forget to share my channel with your family and friends. Try to promote my channel and support my channel ताकि मेरे subscriber and watch hours जल्द से जल्द जो है increase हो. So thank you once again. Allah Hafiz.